हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज आम यही क्लास रे कंप्यूटर रो प्रैक्टिस सेट 11 डिस्कशन करिवा। आपण एही पीडीएफ नोट वीडियो डिस्क्रिप्शन रे थिबा एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल रु डाउनलोड करि परिबे। ओके, आरंभ करिवा। क्वेश्चन नंबर 251 ट्राई करंतु। प्रेजेंटेशन डिजाइन्स regulate the formatting and layout for the slide and are commonly called what? Which option is your right answer? Try karantu. Presentation designs regulate the formatting and layout. Layout माने slide रो structure. Layout माने कौन? Slide रो structure. Formatting माने slide रो type. Okay. तो यहाँ को कौन कहबा ना templates कहबा. Option B templates is your right answer. मन रखंतु template control करिवो overall design like formatting, color, scheme, layout of slide and got a consistent look दबो entire presentation को. That is called what templates. Okay. एवं यही templates रो परीक्षा आसी पारे extension कौन हबो dot POTX. Okay. बट जदि पावर पॉइंट विषय कथा हबा dot PPTX मन रखंतु. Then option C रे placeholders, that is also important. कौन है placeholders मन रखंतु? Placeholders simply गोटे बॉक्स. एथिरे आपण टेक्स्ट को टाइप करि परिबे, चार्ट किंबा इमेजेस को इंसर्ट करि परिबे. बुझियला? कौन है placeholders? Simply गोटे बॉक्स अटे. टेक्स्ट को टाइप करिवा सहित आमे चार्ट किंबा इमेजेस को इंसर्ट करि परिबा. ऑप्शन बी हेबो हेयर राइट आंसर. समस्त चूज करथिले ऑप्शन बी. जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 252 ट्राई करंतु. Which of the following should you use if you want to all the slides in the presentation to have the same look in MS PowerPoint रे? कोंतु प्रश्न बुझंतु. प्रथमे प्रश्न बुझिया. प्रश्न कोन कहूची? निम्नोक्त मध्यरु क्यों ऑप्शन को अपन चूज करिवे इफ यू वांट टू ऑल द स्लाइड्स प्रेजेंटेशन रे थिबा समस्त स्लाइड को सेम लुक देबे, सेथि पई क्यों ऑप्शंस को चूज करि परिवे? ट्राई कले समस्ते. व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी ए प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट. एही प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट जरिया रे जाहा को आपण थीम कहंती ना. डिजाइन टेम्पलेट माने कोन? थीम. से थीम जरिया रे प्रेजेंटेशन रे थिबा स्लाइड को आपण सेम लुक देई परिबे. ओके. देन अछि आउटलाइन व्यू. कोन कहंतु? परीक्षा रे आसी पारे आउटलाइन व्यू. एई जो आउटलाइन व्यू रे आपण कोन करि परिबे कहंतु? आउटलाइन व्यू रे मन रखंतु एडिटिंग टेक्स्ट कंटेंट्स, अर्थात आउटलाइन व्यू रे ओनली टेक्स्ट ही अपीयर हबो. एथरे इमेज किबा ग्राफिक्स अपीयर हबो नाही. बुझियला? नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स इन एमएस एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट रो एक्सेल होचे एक स्प्रेडशीट रो सॉफ्टवेयर. ओके. जेउथरे आपण कोन करंती? बेसिकली कैलकुलेशन डाटा एंट्री पई यूज करा जाय. निम्नोक्त मध्यरु केउटा एक करेक्ट सिंटैक्स अटे कहंतु? ऑप्शन ए रे अछि इक्वल पावर टू एक्यूट को हजो एटा को 3. ऑप्शन बी रे अछि पावर टू एस्ट्रिक 3. ऑप्शन सी रे अछि इक्वल पावर 2 कॉमा 3. ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर? ऑप्शन सी हबो यार राइट आंसर. मन रखंतु आपण जेहेतु 2 acute 3 means that is already 2 to the power 3. That's why it have power function रो आवश्यक नाही. एस्ट्रिक माने तो मल्टीप्लिकेशन पई आसी जिवो, तो एटा पावर रे हबो नाही. तो एटा हे जो आपण को राइट आंसर 2 to the power 3 which is केते 2 into 2 into 2 8 is your right answer आसीबो. यार रिजल्ट केते आसीबो 8 आसीबो. सो एटा ही आपण को करेक्ट सिंटैक्स रे अछि.
ऑप्शन सी समस्त चूज करथिले। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 254 हाउ टू गो टू पेज नंबर 344 in a MS Word document contains 465 pages। प्रश्न कहूँ 465 ହେଉଛି ଏଠାରେ ଟୋଟାଲ ପେଜେସ୍। ଏଠାରେ କ'ଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ପେଜ, ସେଥିରେ ଆପଣ 345 ର ପେଜ ନମ୍ବରକୁ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ଅପସନକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। 345 ର ପେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜି, ପ୍ରେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସି ନୁହଁ, ପ୍ରେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜି ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗो ଟୁ ଡାୟଲଗ ବକ୍ସ ଓପେନ୍ ହେଇଯିବ। देन सेठारे आपण एंटर करिवे 345 एंड प्रेस एंटर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके और F5 रे मध्ये आपनकर गो टू डायलॉग बॉक्स आसी जाए। सो ऑप्शंस अनुसार ऑल्ट जी अछि, एटा ऑल्ट जी नो कंट्रोल जी हो ना, कंट्रोल जी कंट्रोल सी अछि, तो एटा कंट्रोल जी करन, कंट्रोल प्लस जी। ठीक अछि, प्रेस कंट्रोल प्लस जी हो, press Ctrl plus G, then enter 345 and press enter. So option C is your right answer. Clear? Next question jiba, question number 255. What is the maximum number of columns in a table in MS Word? MS Word ro table रे maximum number of columns को केते insert करा जाई परिबो। आपण जदि MS Word रे टेबल को इंसर्ट करिवे सेथिरे मैक्सिमम केतोटी कॉलम को इंसर्ट करि परिवे, मैक्सिमम केतोटी 63 कॉलम को इंसर्ट करा जाई परिबो। ओके 63 कॉलम्स माने रखंत, मैक्सिमम 63 कॉलम सेथिरे इंसर्ट करा जाई परिबो। ओके नेक्स्ट, द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप? हेडर कोन फुटर कोन प्रथमे कहबा, देन आमे आंसर्स को जिबा। देखंतु गोटे पेज अछि, एई पेज रे हेडर एंड फुटर हेउची मार्जिन। हेडर कोन टॉप रे जो मार्जिन दिया जाए दैट इज हेडर, एटा होची हेडर, एवं बॉटम रे पेज रो बॉटम रे जो मार्जिन दिया जिवो दैट इज फुटर। ताले प्रश्न को होची हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड माने आमे पाइबा केउ टैब रे, इंसर्ट टैब रे। देन इंसर्ट टैब रो केउ ग्रुप रे, इलुस्ट्रेशन ग्रुप हबो नै, कारण एथिरे आपण इमेज शेप ग्राफिक्स पाइबे। ऑब्जेक्ट रे तो ऑब्जेक्ट आसीबो, टेक्स्ट ग्रुप रे टेक्स्ट आसीबो। सॉरी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आपनकर टेक्स्ट ग्रुप रे ही आपण पाइबे। ओके एही टेक्स्ट ग्रुप रे ही आपण हेडर एंड फुटर बटन को आपण पाइबे। इंसर्ट टैब को जिबे, प्रथम इंसर्ट टैब, देन टेक्स्ट ग्रुप, देन हेडर एंड फुटर ऑप्शन। ओके देन ऑप्शन डी रे अछि टेबल्स ग्रुप, एथरे टेबल्स को इंसर्ट करा जाई परिबो। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्लियरली बुझियला, ऑप्शन सी समस्त चूज करछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 257 ट्राई करंतु। इन MS Excel to drag a selected range of data to another worksheet in the same workbook, hold down the इन MS Excel रे, माइक्रोसॉफ्ट रो एक्सेल रे आपण ड्रैग करिवे कोनसे एक सिलेक्टेड रेंज रो डाटा को अन्य एक वर्कशीट, अन्य एक वर्कशीट को, एवं सेटा सेम वर्कबुक रे, ताले सेति में आपण केउ की प्रेस करिवे, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और टैब की। प्रश्न बुझुचंदी, गोटे ही वर्कबुक अछि आपनकर, एठी आपनकर गोटे वर्कशीट रे किछि रेंज अछि, डाटा रो रेंज अछि, देन यहाँ पर आउ एक वर्कशीट अछि, बट गोटे वर्कबुक एही सेल रो माने एही वर्कशीट रो डाटा को आपण ड्रैग करिवे, एटा कोन एथरे एक्टिव अछि, एटा को आपण एही शीट को ड्रैग करिवे। तो सेति में आपण केउ की को प्रेस करिवे कहंतु, सेति में केउ की को प्रेस करि परिवे? कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट टैब, ऑप्शन ए कंट्रोल की इज योर राइट आंसर।
ठीक है कंट्रोल की जरिए ट्रैक करा जाई परिबो नेक्स्ट S is approximately 1 billion bytes S is approximately 1 billion bytes megabyte gigabyte terabyte option D none of these megabyte माने MB gigabyte माने होची आपनकर GB terabyte माने TB which option is the right answer S is approximately 1 billion byte हमें जानी चंदी 1 megabyte होची 1 million byte 1 gigabyte होची 1 billion 1 terabyte होची 1 trillion so gigabytes is the right answer okay काहे कि 1 billion आपनकर डेसिमल नंबर सिस्टम अनुसारे 1 kb होची that is 10 to the power 3 bytes माने 1000 bytes यदि 1 megabyte कोन हिजबो that is 10 to the power 6 then 1 gigabyte होची that is 10 to the power 9 so 10 to the power 9 होची that is 1 billion that's why option B हेबो यारो राइट आंसर otherwise जदि हमें माने ए डेसिमल सिस्टम टा आपनकर बेसिकली यूज करा जाय पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव पे otherwise हमें जानि जदि बाइनरी कोड अनुसार 1 किलोबाइट केते that is 1024 बाइट्स ओके नो that's why डेसिमल सिस्टम अनुसार gigabyte होची 1 billion bytes क्लियरली बुझी होची ऑप्शन बी काहे के हो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 259 what does the VLOOKUP function do in MS Excel कोंतु MS Excel रे VLOOKUP माने जहा को कहा जाय vertically lookup बेसिकली वैल्यू फाइंडिंग पाई एही लुकअप फंक्शन को यूज करा जाय ताले ऑप्शंस अनुसार व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑप्शन सी हेबो समस्त चूज करचंदी फाइंड्स वैल्यू इन एन एरे माने कोन गोटे रेंज को ही एरे कहबा ठीक अछि गोटे रेंज को एरे कहबा ताले गोटे रेंज बा एरे रे वैल्यू को वर्टिकली फाइंड करबा पई VLOOKUP फंक्शन को यूज करा जाय गोटे कॉलम रे ठीक अछि गोटे कॉलम रो रेंज रे ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर समस्त चूज करचंदी ऑप्शन सी नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 260 ट्राई करंतु a feature in MS Excel that displays only the data in a column according to the specified criteria प्रश्न कोन कहूची MS Excel रो केउ फीचर माने केउ ऑप्शन रे जहा डिस्प्ले करिवो ओनली द डाटा इन ए कॉलम गोटे कॉलम रे अकॉर्डिंग टू द किछि सेतरे क्राइटेरिया दिया जिवो दैट इज फार्मूला तो हेबो नै बिकॉज़ फार्मूला कैलकुलेशन करिवो सॉर्टिंग तो आपनकर असेंडिंग टू डिसेंडिंग ए टू z टू ए फिल्टर इज राइट आंसर फिल्टरिंग करिवा हेबो हेरो राइट आंसर पिवट हेबो नै कारण पिवट डाटा को समराइज करिवो किमा एनालिसिस करिवो सो ऑप्शन सी फिल्टरिंग इज योर राइट आंसर ओके केउ फीचर एमएस एक्सेल रो फिल्टरिंग फीचर माने रखंतु परीक्षा रे आसी पारे ओके अर्थात कोन शो एंड हाइट सही ऑप्शंस जरिया आपण करि परिबे नेक्स्ट इन एमएस वर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज मार्जिन कोन एमएस वर्ड रे आपण मार्जिन चेंज करिवा पई निम्नोक्त मध्यरु केउ ऑप्शंस को जाई परिबे केउ ऑप्शंस को पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स को जाई परिबे ऑप्शन बी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स देखंतु आपनकर पेज लेआउट रहिछि देन सीठी आपनकर मार्जिन ऑप्शन रहइबो देन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स को जाई कि आपण मार्जिन को चेंज करि परिबे ओके ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट हाउ कैन यू क्रिएट ए यूनिफॉर्म अपीयरेंस by adding a background image to all slides in MS PowerPoint देखंतु माइक्रोसॉफ्ट रो पावरपॉइंट रे यूनिफॉर्म अपीयरेंस माने समान रहइबो प्रत्येक स्लाइड एवं एहारो बैकग्राउंड रे आपण इमेज ऐड करिवे तार अर्थ कोन प्रत्येक स्लाइड रो बैकग्राउंड रे इमेज रहइबो सेठी पई आपण केउ ऑप्शंस को यूज करि परिबे देखंतु व्यू टैब रहिछि आपनकर व्यू टैब को जिबे देन एडिट द स्लाइड मास्टर जरिया रे आपण यूनिफॉर्म अपीयरेंस सहित
प्रत्येक स्लाइड रे माने जहाँ भी समस्त स्लाइड कथा कह जाउची ऑल स्लाइड्स रे बैकग्राउंड इमेज को ऐड करि पारिबे बुझियला ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 263 ट्राई करंतु इन एमएस एक्सेल द सेल रेफरेंस फॉर ए रेंज ऑफ सेल्स एमएस एक्सेल रे सेल रो रेफरेंस माने सेल रो एड्रेस फॉर ए रेंज ऑफ सेल्स पई that starts in cell C1 to आरंभ होची then goes over to column H and down to row 10 ताले एटा को आपण केमिति लिखिबे C1 10 C1 colon 10 H लिखा जिवो C1 colon H10 लिखा जिवो C1 hyphen H hyphen 10 लिखा जिवो C1 colon H colon 10 लिखा जिवो अर्थात कोन आपण C1 to H10 पर्यंत लिखिबे ना H10 प्रथमे कोन आसीबो आपनकर कॉलम देन आसीबो रो प्रथमे कॉलम देन आसीबो रो ओके बिकॉज़ कॉलम एड्रेस अल्फाबेट रो एड्रेस नंबर so option B is your right answer C1 colon H10 C1 colon H10 is your right answer option B समस्त चूज करछंदी option B is your right answer okay next question jiba question number 264 by default your documents print in dash mode in MS Word कोन MS Word रे by default आपनकर document रो print क्यों orientation रे थाए landscape portrait page setup print view by default कोन रहइबो portrait mode रे थाए एटा रुचि आपनकर portrait mode एटा आसी जिवो आपनकर landscape mode एटा landscape एटा portrait तो एही मोड रे ही आपनकर जेमिति A4 साइज रो पेज राइट तो एटा आपनकर पोर्ट्रेट मोड रे रहइबो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस बी इन एमएस वर्ड कोन एमएस वर्ड रे कंट्रोल प्लस बी रो फंक्शन कोन एमएस वर्ड रे कंट्रोल प्लस बी रो फंक्शन कोन हे परिबो कंट्रोल प्लस बी बोल्ड करिवो makes the selected text bold option C makes the selected text को कोन करिवो बोल्ड करिवो कंट्रोल B नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 266 ट्राई करंतु in MS Excel you can create hyperlinks from the Excel workbook to hyperlink कोन कोंतु प्रथमे what is hyperlink hyperlink कोन अटे hyperlink होची सिंपली जदी बुझिबा गोटे नॉर्मल टेक्स्ट को आपण लिंक रे कन्वर्ट करिवे ताहले एठारे से प्रश्न कहूची MS Excel रे आपण hyperlink को क्रिएट करि परिवे फ्रॉम Excel workbook to web page on company internet हे परिबो a web page on the internet भी हे परिबो other office applications document भी हे परिबो so all of the above is your right answer अर्थात hyperlink आपण जे कोन से गोटे लोकेशन सहित कनेक्ट करि परिबे सेटा गोटे कंपनी रो इंटरनेट वेब पेज हे परिबो किबा गोटे इंटरनेट रो वेब पेज हे परिबो किबा अदर ऑफिस एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट लाइक वर्ड पीपीटी ओके आउटलुक एनीथिंग so option D is your right answer next in MS Excel what does sum if function do कोन MS Excel रे sum if function रो काम कोन sum माने एडिंग करिवा if माने कंडीशन अर्थात add cell value based on a condition option A हबो राइट आंसर cell value को ऐड करिवा कोनसे एक कंडीशन को बेस करके लाइक देखंतु इक्वल sum if then A1 range to A10 बट आपनर कंडीशन होची ग्रेटर देन 50 अर्थात कोन एही रेंज रे थिबा समस्त 50 थारु लार्ज नंबर गुडा कही तारो एडिशन आसीबो रिजल्ट रे दैट इज सम इफ फंक्शन नेक्स्ट इन ऑर्डर टू एंटर मल्टीपल लाइन्स in a cell in MS Excel which key should be pressed after each line
कहतु कौन प्रश्न बुझुचंदी ये प्रश्नटा पढ़िबा परे कौन बुझी पाउचंदी देखंतु से कहूची एंटर मल्टीपल लाइन्स इन ए सेल आपनकर एमिति सेल अछि ठीक अछि वर्तमान मु एही सेल रे जहाँ भी किछि टेक्स्ट टाइप करिवि दैट इज कोन हो एही सेल रे टाइप हो से कहूची एही सेल रे ही आपण मल्टीपल लाइन लिखिबे सेति पय आपण केउ की प्रेस करिवे जेतेबेले आपण एंटर प्रेस करिवे दैट इज कोन हो ना नेक्स्ट सेल को सेटा शिफ्ट हो पुनी थरे एंटर नेक्स्ट सेल पुनी थरे एंटर नेक्स्ट सेल तो एंटर तो हबो नाही सेति पय ऑल्ट सहित आपण एंटर प्रेस करिवे ताले सेही सेल रे ही आपनकर नेक्स्ट लाइन गोटे क्रिएट हबो जहा को आपण कोन कहंती रैप टेक्स्ट मध्ये कहंती रैप टेक्स्ट मध्ये कहंती ना ओके सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 269 मैच द फॉलोइंग आपनकर पावर पॉइंट रहला वर्ड रहला एक्सेल रहला टेक्स्ट फाइल रहला इपटे एक्सटेंशन रहिछि मैच करंतु पावर पॉइंट रो कोन हिजबो pptx वर्ड फाइल रो doc एक्सेल फाइल रो excelsx देन आपनकर टेक्स्ट फाइल रो .txt तो ऑप्शन किछि नाही सिंपली हमें मैच करिवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 270 द वर्ड ftp स्टैंड्स फॉर कोन हो कोंतु फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओल्डर वर्जन रे गोटे कंप्यूटर रु अन्य एक कंप्यूटर को डाटा डाउनलोड अपलोड करिया पई ftp यूज करा जाउथिला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 271 in ms excel the drag and drop method of copying माने कॉपी और मूविंग करिवार गोटे मेथड होची ड्रैग एंड ड्रॉप मन रखंतु एटा भी परीक्षा राशि पारे ड्रैग एंड ड्रॉप को केउ मेथड को जाय दैट इज कॉपी और मूव ताले पचारछि एटा आपण केमिति करि परिबे ठीक अछि माने एटा केउ थिरे हे परिबो ऑप्शन ए रे कहूची कैन बी यूज्ड बिटवीन वर्कशीट बट नॉट वर्कबुक माने वर्कशीट रे हे परिबो वर्कबुक रे हे परिबो नाही कहूची ऑप्शन सी रे कहूची कैन बी यूज्ड बिटवीन बोथ वर्कबुक्स रे भी हे परिबो वर्कशीट रे भी हे परिबो ऑप्शन सी रे कहूची कैन बी यूज्ड बिटवीन वर्कबुक रे हे परिबो किंतु वर्कशीट रे हे परिबो नाही ऑप्शन डी नन ऑफ दिस व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर ड्रैग एंड ड्रॉप माने आपण जेमिति कॉपी करंती मूव करंती एटा बोथ आपनकर वर्कबुक रे भी हे परिबो एवं वर्कशीट्स रे मध्ये हे परिबो तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर राइट ऑप्शन बी समस्त चूज करछंती ऑप्शन बी हेबो आपनकर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 272 in ms powerpoint if you want to insert some slides from another presentation into the current one choose सेति पय आपण कोन चूज करि परिबे ms powerpoint रे आपण कोन चाहंती ना इंसर्ट करिवे किछि स्लाइड को अन्य एक प्रेजेंटेशन रु सेति पय आपण कोन करिवे प्रथमे इंसर्ट को जिवे देन स्लाइड्स को अन्य प्रेजेंटेशन रु चूज करिवे ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर चला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 273 a function inside another function is called a dash function like देखंतु equal sum what function then या भीतर पुणी मु लिखुची average range दोची a1 colon to a5 then comma b1 that is कोन गोटे फंक्शन भीतर आ गोटे फंक्शन अछि एटा को आजिवो नेस्टेड को आजिवो मन रखंतु कोन को आजिवो नेस्टेड फंक्शन को आजिवो फंक्शन मध्य रे फंक्शन को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 274 for addition of a row at the end of a table in ms word move the cursor at the end and press like गोटे टेबल अछि ठीक अछि आपण एही एंड रे गोटे रो ऐड करिया पई चाहंती सेति पई कोन करिवे आपण एंड रे कर्सर को आनिबे एवं या सहित टैब की को प्रेस कले आ गोटे रो इंसर्ट हे जो ऑप्शन बी टैब की इज योर राइट आंसर ओके नेक्स्ट which one is not a function in ms excel sum आपनकर समेशन पई एडिशन पई मैक्सिमम मिनिमम पई किंतु एवीजी नुहा गोटे फंक्शन एथि पई आपनकर कंप्लीट एवरेज यूज करा जाय ओके एवरेज टाइप करिया पई पड़े एवरेज फंक्शन पई सो ऑप्शन बी हिजो आपनकर राइट आंसर
Next, which of these is a shortcut to add a border to selected cell in MS Excel रे? Selected cell रे आपण border apply करिवे सेति पई आपण कोन कंट्रोल शिफ्ट एंड को प्रेस करि परिवे. कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड की माने आपण को जो 7 नंबर ठीक अछि कीबोर्ड रो 7 नंबर रे थाय एंड कीटा को आपण प्रेस करि परिवे. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 277. Which key should be pressed to start a new paragraph in MS Word? MS Word रे आपण गोटे न्यू पैराग्राफ आरंभ करिवे सेति पई एंटर की सिंपली एंटर की को प्रेस करि परिवे. ओके एंटर की इज हेयर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 278. Which input device cannot be used to work in MS Office? MS Office रे निम्नलिखित मध्यरु केउ इनपुट डिवाइस काम करिवो नै? स्कैनर हे परिवो, स्कैन करा जाय परिवो, लाइट पेन हे परिवो, माउस हे परिवो, किंतु जॉयस्टिक एटा आपनकर गेम्स खेलिबा पई यूज करा जाय, गेमिंग पई यूज करा जाय जॉयस्टिक. सो जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस को आपण MS Office रे काम करि परिबे नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 279. Which key is used to rename a file in Windows operating system? Windows operating system रे रीनेम करेबा पई केउ की प्रेस करा जाय? F2 मन रखंतु. F2 रीनेम करिवे. F1 आपनकर हेल्प पई आसे जनरली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 280. In MS Excel, how can you remove borders applied in cells? कोन से को सेल रे सेतिरे बॉर्डर को अप्लाई करा जायछि, आपण केमिति सेटा को रिमूव करिवे कोंतु. चूज नॉन ऑन बॉर्डर टैब ऑफ फॉर्मेट सेल्स ही परिबो, किछ असुविधा नै. ओपन द लिस्ट ऑन बॉर्डर टूल इन फॉर्मेटिंग टूल बार देन चूज नो बॉर्डर एटा भी ही परिबो. सो ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव जरिया रे आपण बॉर्डर को रिमूव करि परिबे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 281. In MS Excel, which function displays row data in column or column data in row? देखो रो रो डाटा जहा रही सेटा कॉलम को जीवो, कॉलम रो डाटा ता आपन को रो को आसी सेटा को जाय ट्रांसपोज फंक्शन. केउ फंक्शन? ट्रांसपोज फंक्शन मन रखंतु. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 282. The maximum zoom percentage in MS PowerPoint is? Microsoft रो PowerPoint रे maximum zoom percentage 400%. केते 400% मन रखंतु. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 283. When giving presentation and you need to go few slides back, the best way कोन हे परिबो? Press escape, normal view, thumbnail, then resume करिवे हे परिबो. Press backspace until desired slide एटा भी हे परिबो. Right click, go to slide, then select एटा बेस्ट वे हे परिबो. ऑप्शन सी आपण राइट क्लिक करिवे जे स्लाइड रे छथि जते नंबर स्लाइड को जिबा पई दरकार गो टू स्लाइड को जिबे देन सेठी सिलेक्ट करि देबे. दैट इज आपनकर डायरेक्टली आपण सेठी मूव करि परिबे. ऑप्शन सी तो बेस्ट वे लागुछि. नेक्स्ट फायरवॉल इज यूज्ड इन पीसी फॉर कोंतु. पीसी माने कोन? पर्सनल कंप्यूटर. ए पर्सनल कंप्यूटर रे फायरवॉल को कोथि पई यूज करा जाय? सिक्योरिटी पई. ठीक अछि. फायरवॉल गोटे ट्रैफिक भाबरे काम करिवो आपनकर कंप्यूटर एंड नेटवर्क मध्य रे. कंप्यूटर एंड नेटवर्क मध्य रे फायरवॉल कोन गोटे? सिक्योरिटी माने ट्रैफिक भाबरे काम करिवो. सिक्योरिटी पर्पस रे यूज करा जाय. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 285 ट्राई करियो. ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 285. In MS Excel you want to paste formula results but not the underlying formula to another cell. The procedure is very simple. आपण फार्मूला रो रिजल्ट को टाइप करिवे ना कि फार्मूला. सेति भाई कोन करि परिवे? क्लिक एरो ऑन पेस्ट बटन देन वैल्यू. से फार्मूला रो वैल्यू आसी जिवो. माने से एहा कहया पई चाहूची पेस्ट स्पेशल. ओके नॉट फार्मूला ओनली वैल्यूज. जेले बुझियला त आपनर के ऑप्शन रे रहइबो? पेस्ट स्पेशल्स ऑप्शन रे रहइबो. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 286. You have 100 of digital photos you want to put into a slideshow. Quickest method in MS PowerPoint. आपन पाखरे बहुत सारा फोटो अछि सेटा आपन MS PowerPoint रे क्विकली गोटे स्लाइड रे इंसर्ट करिवा पई इंसर्ट को जिबे
देन पिक्चर को जिबे देन सेटारे न्यू फोटो एल्बम को चूज करिवे सो दैट प्रत्येक इमेज जहाँ भी इमेज अच्छे आपन निकट में गोटे गोटे स्लाइड रे ता इंसर्ट होइकी आपनकर प्रेजेंटेशन क्रिएट हो पारिबो ओके ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट what will happen if you select 4 rows from row heading in MS Excel and then right click then select insert चारोटी रो कौन है insert to 4 new rows है option B is your right answer next question how do you insert a row in MS Excel रे आपण किपरि रो को insert करि परिबे how do you insert a row in MS Excel रो को insert केमिति करिबा राइट क्लिक करंतु रो हेडिंग रे देन insert करंतु ऑप्शन A is your right answer ऑप्शन A तो ठीक लागु देन ऑप्शन B रे कहिछि सिलेक्ट रो हेडिंग एडिट रो ऑप्शन A ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 289 इन MS Excel how do you change column width to fit the content सेतमे कोन करा जिवो डबल क्लिक बाउंड्री टू द राइट ऑफ द कॉलम हेडिंग अपन डबल क्लिक करि देबे ना जो आपनकर सेल रो जो बाउंड्री रे थिबो देन ऑटो फिट हे जिवो से नेक्स्ट which of the following is an absolute cell reference code निम्नोक्त मध्यरु केउटा ओटे absolute cell reference हे परिबो absolute cell reference केउटा हे परिबो डॉलर साइन आसीबो डॉलर ए $1 next what is the primary function of windows taskbar रो primary function कोन अटे windows taskbar रो आपनकर डेस्कटॉप रो बॉटम रे थाए विंडोज टास्क बार टू डिस्प्ले रनिंग एप्लीकेशंस ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर जहां भी रनिंग एप्लीकेशंस को से डिस्प्ले करिवो जेमति गूगल क्रोम आपण वर्ड ओपन करचंती किबा आपण जहां भी किछि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करचंती ता आपनकर शो हो टास्क बार रे एवं यार होची डेस्कटॉप रो बॉटम बार याको आपण मूव करि परिबे ठीक अछि राइट लेफ्ट अप आपण नै परिबे बट एठारे आपनकर लॉक हेकी थाय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 292 which windows key combination is used to switch between open windows like देखो एटा रहला गूगल क्रोम देन एटा रहउची आपनकर MS पावरपॉइंट हाले आपण माउस जरिया रे गूगल क्रोम टू पावरपॉइंट को आपनकर माउस पॉइंटर जरिया स्विच करि परिबे बट शॉर्टकट की कोन ऑल्ट सहित टैब ऑल्ट सहित टैब की जतले प्रेस हबो देन आपण स्विच करि परिबे नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द विंडोज यूटिलिटी यूज्ड टू मैनेज डिस्क स्पेस एंड रिमूव टेम्पररी फाइल्स सेति भाई डिस्क क्लीनअप को यूज करा जाय डिस्क डिफ्रैगमेंटर कोन एटा दैट इज रीअरेंज करैबो गोटे डिस्क को फ्रैगमेंटेड डाटा को कोनोसी डिस्क रे रीअरेंज करैबो डिस्क मैनेजर कोन डिस्क मैनेजर होची डिस्क जो आपण पार्टीशन करंती कंप्यूटर को फॉर्मेटिंग करिया समय ओके ऑप्टिमाइजर समथिंग नाही तो ऑप्शन है डिस्क क्लीनअप इज योर राइट आंसर नेक्स्ट द नंबर ऑफ पिक्सेल्स displayed on a screen is known as the screen रो कोन कहजिवो resolution कहजिवो screen resolution is your right answer what is the name of the windows built in antivirus software windows द्वारा प्रोवाइड करा जातबा गोटे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होची विंडोज डिफेंडर कोन एटा विंडोज डिफेंडर मन रखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 296 पेरिफेरल्स आर कोन हो कोंतु पेरिफेरल्स आर कोन हे परिबो इनपुट आउटपुट एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल्स अर्थात पेरिफेरल्स काहू कहबा जहा आपनकर मदरबोर्ड रे इंटीग्रेटेड होई नथिबो ता एक्सटर्नली कनेक्ट हबो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को कोन कहबा पेरिफेरल्स कहजिबो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 297 which MS Word feature allow you to automatically format a document with a pre-designed layout बहुत इजी क्वेश्चन कोन कहजिबो टेम्पलेट्स कहजिबो टेम्पलेट्स इज योर राइट आंसर ए टेम्पलेट्स रे आपण थीम्स को ऐड करंती नेक्स्ट हाउ डू यू इंसर्ट ए पेज ब्रेक इन MS Word कोन यार शॉर्टकट की कोन पेज ब्रेक रो शॉर्टकट की कोन हे परिबो पेज ब्रेक रो शॉर्टकट की व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर आपण कंट्रोल सहित जते बेले एंटर को प्रेस करिवे देन आपनकर पेज ब्रेक हबो ओके
कंट्रोल शिफ्ट एंटर आपनकर गोटे कॉलम ब्रेक हबो एटा गोटे कलर एटा गोटे कॉलम देन एटा तो पेज डाउन पेज अप टा आपनको नेविगेट करिवो सो ऑप्शन सी ही ठीक लागुଛି ऑप्शन सी ठीक हबो तो ऑप्शन सी ठीक हबो ना देन देखंतु गोटे पेज अछि आपनकर कर्सर एठी अछि व्हाट इज कर्सर इंसर्ट एंड पॉइंट जाको कहले गोटे ब्लिंकिंग पॉइंट ओके तो आपण चाहउछन एठू ए पेज टा को दुई भाग करिवे सेति भाई कंट्रोल सहित एंटर को प्रेस करिवे देन एटा पेज 1 हे जो पेज 2 हो ओके otherwise without shortcut key how can you insert a page break insert tab को जिबे देन आपनकर पेजेस रो ग्रुप रही छै देन सेठी आपण पेज ब्रेक ऑप्शन पाइ जिबे insert pages group then page break insert tab रे जहा आपनकर insert tab home tab प्रथमे कोन फाइल मेन्यू देन होम मेन्यू देन इंसर्ट मेन्यू आसे से इंसर्ट मेन्यू रे करि परिबे बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 299 व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रैक चेंजेस फीचर इन एमएस वर्ड को एमएस वर्ड रे गोटे ट्रैक चेंजेस रो फीचर रही छै एटा आपनकर केउ टैब रे अवेलेबल रही छै बा केउ मेन्यू रे आपण कमेंट सेक्शन रे जणाइबे ओके निहाती कमेंट सेक्शन रे जणाइबे देन कोंतु यार काम कोन यार उद्देश्य कोन देखंतु टू कोलैबोरेट विथ अदर्स अर्थात जदि मु सिंपल भाषा रे कहिबी आपनको आपण जदि ट्रैक चेंजेस को अलाउ करिसंती ताहाले जणे आपनको डॉक्यूमेंट रे कोन से एडिट करिछि बा कोन चेंज करिछि तार गोटे डिलीटेशन पॉइंट आसी जिवो माने ट्रैक चेंजेस को गले आपण जानि परिबे ता रिकॉर्ड करिवो जे कोन कोन सेथि एडिट करा जाईछि सेही पॉइंट गुडा को एथि शो हो जिवो जेला अर्थात टू कोलैबोरेट विथ अदर्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 300 memory is made up of memory माने RAM ROM etc आपनकर made up of large number of cells option C is your right answer large number of cells को नहीं की आपनकर मेमोरी कोन थाए तयारी होय थाए ओके तो क्वेश्चंस 301 टू हमें नेक्स्ट क्लास रे कोन करिवा कंटिन्यू करिवा आपण ए पीडीएफ नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रे थिबा एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल रो डाउनलोड करि परिबे गोटे रिक्वेस्ट रखंतु क्लास टी को लाइक करंतु तो बहु मात्रा रे शेयर करंतु ओके एवं आपनकर जहां भी डाउट रहउची आपण कमेंट सेक्शन रे पचारि परिबे जहां भी डाउट रहउची क्वेश्चंस रिगार्डिंग जहां भी डाउट रहउची आपण क्यों प्रश्न को भलो भाबरे बुझी पारिले नाही आपण पचारंतु देन हम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करिवा 301 आई होप ए क्लास टी आपण मानक पई बहुत यूजफुल हबो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास